नमस्कार, आप सभी का स्वागत है लीडिंग भारत टीवी में और मैं हूं आपके साथ कशिश पांडे। साउथ सुपरस्टार अल्लू अर्जुन आज सुबह चंचलगुड़ा सेंट्रल जेल से रिहा हो गए हैं। जेल से रिहाई के बाद वो अपने घर पहुंचे और सभी का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने कहा कि मैं कानून का सम्मान करता हूं। जो हादसा हुआ वो बेहद दुखद था। पीड़ित परिवार के प्रति मेरी संवेदना है। मैं जांच में पूरा सहयोग करूंगा। संध्या थिएटर केस में कल उन्हें गिरफ्तार किया गया था। इसके बाद उन्हें लोअर कोर्ट में पेश किया गया। लोअर कोर्ट ने अल्लू अर्जुन को 14 दिन के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया। इसके बाद उनके वकीलों ने हाई कोर्ट का रुख किया और यहां से अल्लू अर्जुन को अंतरिम जमानत मिल गई। हालांकि तेलंगाना हाई कोर्ट ने उन्हें 4 हफ्ते की अंतरिम जमानत दी है। हालांकि शुक्रवार की रात उन्हें जेल में ही बितानी पड़ी क्योंकि अधिकारियों को देर रात तक जमानत आदेश की प्रति नहीं आदेश मिले हैं। आप भी सुनिए अल्लू अर्जुन ने क्या कुछ कहा है। Namaste. Thank you. I'd like to thank everybody from all over for all your love and support. Thank you so much. I'm genuinely touched by everybody's love from all over the country and everywhere, from all the industries, all the people, all the states. Thank you so much for all the love, and especially my fans. Thank you, Andy. Thank you. I love you, my fans. Thank you so much for your unconditional love and support. And of course, I cannot finish it without saying the thanks to the media. Thank you so much. I like to thank the entire media for all your love and support. Thank you, Ante. I just wanted to say thank you. Thank you. Sir, మీ అరెస్ట్ మీద కాన్ఫిడెన్స్ ఏమైనా ఉందా సార్? మీ అరెస్ట్ మీద కాన్ఫిడెన్స్ Anything else? Sir, do you feel you were targeted? This is a fabricated case booked against you. Do you feel you were made a target? సార్ బన్నీ గారు నిన్న ఢిల్లీలో I just wanted to say The emotions that you have gone through and your family has faced. ఫ్యామిలీకి ఏం చెప్తారు సార్? ఫ్యామిలీకి సో దాని మీద అల్లు అర్జున్ గారు వాళ్ళ ఫ్యామిలీకి ఏం చెప్తారు? చనిపోయిన కుటుంబానికి ఏం చెప్తారు? నేను ఒకటే చెప్తానండి. Once again, we're extremely sorry for the family and I will personally be there to support them in whatever way possible. It's purely accidental. Cinema theatre I'm inside a cinema theatre watching a film with my family and an accident happened outside, which I was inside a theatre watching a movie with my family and the accident happened outside. It's purely of no direct connection to me. It's purely accidental, purely unintentional, and my love and sympathies are genuinely there with that family and I'll be there I'll be there to support them in whatever way possible. And I've been coming to the same theatre for the last I've been coming to the same theatre for the last 20 years and I've been to the same place more than 30 times and never any accident like this happened. It is purely unfortunate accident and we're extremely sorry for the accident that has happened, which is totally out of our control. Did you And follow Telugulo the kuda same procedure every time that you have informed the police? Inka, I don't want to get into all the details. This is what it is because as the case is on, I should not speak anything that will tamper the case. So I'd like to reserve my comments. Yes, of course, family kalustaniki wait chestunam. Yes, Ante, thank you. दरअसल 4 दिसंबर को फिल्म पुष्पा 2 की स्क्रीनिंग के दौरान हैदराबाद के संध्या थिएटर में भगदड़ मच गई थी। इस भगदड़ में एक 35 साल की महिला की मौत हो गई थी और उनका 8 साल का एक बच्चा भी घायल हो गया था। पीड़ित परिवार ने इस घटना के लिए फिल्म के एक्टर अल्लू अर्जुन, उनकी सुरक्षा टीम और थिएटर प्रबंधन के खिलाफ चिक्कड़पल्ली थाने में मामला दर्ज कराया था। जी हां, इसकी शिकायत के आधार पर अल्लू अर्जुन की कल गिरफ्तारी हुई थी और इसके बाद वो पूरी रात जेल में रहे। हालांकि सुबह उन्हें जेल से रिहा कर दिया गया है। अब वो जमानत पर बाहर आ गए हैं। आपको क्या लगता है, क्या वाकई इस पूरे मामले में अल्लू अर्जुन की गलती थी या नहीं? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा और इसी तरह की देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए लीडिंग भारत टीवी।